Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to learn about walls and wall finishes. So this lecture is divided into two parts. The first part that we are going to deal with today will include the definition and importance of walls and also will cover what all different types of walls are there, and we are going to learn about the various types of walls. In the second part of the video, we will be covering the wall treatments and their types. So let's start with what are walls. दीवारें होती क्या हैं? Walls are structural envelope of a building, यानी किसी भी बिल्डिंग का, चाहे वो घर है या कोई हाई राइज बिल्डिंग है, उसका बाहरी आवरण बनाने का जिसे काम करते हैं वो है वॉल्स. जो बाहरी आवरण बनता है वो वॉल्स के माध्यम से बनता है. एक्सटीरियर एनवलप जो है वो वॉल्स के माध्यम से बनता है. इसके साथ ही वॉल्स ये भी डिटरमाइन करती हैं कि मूवमेंट उस बिल्डिंग में जो होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है. साथ ही वॉल्स फंक्शन इन कंजंक्शन विद फ्लोर्स एंड रूफ्स, जो जमीन और छत को मिलाकर उसके साथ मिलकर फंक्शन करती हैं ताकि बाहरी और अंदर के वातावरण के बीच एक बैरियर बन सके. Also it supports the doors and windows. We can't imagine हम कहाँ doors और walls windows install करेंगे if there were no walls. Also it supports ventilation, staircases, fireplaces, and it provides us boundaries ताकि हम बाहरी तत्वों से, outer elements से secured रहते हैं, protected रहते हैं. Also from the environmental elements it provides us protection. So the overall function of a wall is to provide a barrier. Okay, so number one, it provides us with a barrier. Also it produces the overall structure of a building. Without walls there would be no structure of any building. So the segregation of rooms, of the outer area, of bathrooms, kitchen, all these segregations are only possible with walls. So that is how important walls are in the interior spaces and also for the building at large. Now coming to the concept of wall. Walls यानी दीवारें basically इतनी importance इसलिए लेती हैं क्योंकि उसकी कुछ abilities हैं, कुछ qualities हैं. So the quality of a wall is and should be to remain in a place and stay durable for the required length of time. हम चाहते हैं तब तक हमें एक durable, strong shield के रूप में wall role play करती है. It is semi-permeable. That is, it filters out all the unwanted elements that we do not want to come into our house, whether it is rain, wind, heat, sun, fire, insects, animals or even humans जिन्हें हम नहीं चाहते वो दीवार को देखकर ही पलट जाते हैं. वो because हमने घर के आसपास दीवार बनाई है या घर दीवारों से बनाया है तभी हम अनचाहे तत्वों को भी, unwanted elements को भी, we can keep them at bay. Also it is semi-permeable. How? Because at the same time through doors and windows it invites the things that we need inside. The desirable elements can enter, that is the light, fresh air and even people. So it is a semi-permeable barrier. It can act as a barrier for those things that we don't want, and at the same time it permits, it has this ability through that it can hold doors and windows through which we can permit the desirable elements to enter into our space. The third ability of the concept or the wall is aesthetics. It is the wall which provides us a canvas to play with the aesthetics of a building. It provides us as the basis for using different colors, designs, textures, structures, etc. So, in order to establish the aesthetics of a building, यानी खूबसूरती, उसकी दिखावट, किसी भी बिल्डिंग की खूबसूरती और दिखावट को तय करने के लिए
वॉल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं. And at the same time, the biggest ability of a wall is to provide all this, the durability, the permeability, barrier, aesthetics, at a effective, cost effective manner, that it should be at a cost which should be acceptable, and it should be including the initial and the maintenance cost, even the construction cost, painting, treatments, and the maintenance at the later years. So these four abilities makes the concept of wall so very important for any interior space designing and for any building. So why are walls so important? Walls are important because number one, they provide the structure. Without walls, it is impossible to create a building, to create a space. Another thing, they provide supports to the roof, to the floor, to ceilings, etc. छत किस पे बनेगी? छत दीवार पे बनेगी. तो जब तक हम दीवार नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे तब तक हम छत नहीं बना सकते. साथ ही जो भी स्पेस है बिल्डिंग में उसको सेग्रीगेट करना, उसको विभाजित करने के लिए भी हमें किसी ना किसी प्रकार के दीवार की आवश्यकता पड़ती है. यानी अगर हम एक बड़े हॉल को 4 कमरों में विभाजित करना चाहते हैं तो हम किस माध्यम से करेंगे? हम उसमें दीवार बनाकर उसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे. Also, it provides us with different forms of structural elements. आप वॉल को छोटी, पतली, ग्लास की, मिट्टी की, क्ले सीमेंट की, आप ब्रिक्स की, तो आप किसी भी तरीके से आप वॉल को बनाइए, आप एक अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट अवेलेबल करवाते हैं दीवार के माध्यम से. The biggest importance, it provides shelter and security. The basic need of any human being is roti, kapda, makan. And why makan? Because it provides us with shelter and security. Without the four walls enclosing us, we will never feel, or we cannot feel the sense of security and protection. So walls also play a very big role in providing the sense of shelter and the sense of security. It also creates a barrier that we have covered, that walls are the most effective barriers for any person to protect itself from the outer elements, from the environmental elements, from the undesirable elements in terms of humans, animals, insects, rain, heat, fire, sun, etc. And one of the most biggest of importance that we tend to ignore at times is walls also provide us with the utility of fixing up the wiring of the house, for hiding all the plumbing of the house. Imagine एक ऐसा घर जिसके हर वायर, हर पाइप बाहर एक्सपोज्ड है. बट दिस इज नॉट सो. वो सारे वायर्स और पाइप्स हम दीवारों में दबा देते हैं. तो दीवार की एक बहुत बड़ी उपयोगिता यह भी है कि वो अपने अंदर उन सारे एलिमेंट्स को भी जज्ब कर लेती है जो एलिमेंट्स हम बाहर नहीं दिखाना चाहते, लाइक द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड द plumbing, the pipes, the AC pipes, the fittings, the wiring fittings, etc., etc. So this is how important walls are for any building and for any space. It provides support to the building. It provides the basic structure, the basic skeleton of the building. It is beautiful. Walls in terms of paintings, arts, graffitis, textures, materials can provide so much aesthetic appeal to a building and beauty to a building. Also, through walls, a person can even express oneself. So, if in my house I have painted my walls pink, then it gives out a certain sense of femininity of my personality to whosoever is visiting. Also, if the walls are exposed, like if it is a exposed brick wall of it, or it is a masonry wall, that gives a very, very masculine feel. So that also
How this is how walls can also help in expressing the personality or the underlying character of the owner of the house or the designer of the building. It serves as a barrier from all the undesirable elements. It gives us a sense of security because we are enclosed in the walls, so we feel secured that nobody is going to attack us or harm us. And the utility section, which is very important, that walls provide us with the medium to hide all those ugly wirings and plumbings and pipes. Coming to the second aspect or the second part of today's lecture, which is the types of walls. Now, the walls or their types can be divided into different types on the basis of various characteristics and various criteria. So, based on the structural strength and distribution of load, because we know that walls are bearing the load of so many items and so many elements in the house, whether it is the roof, whether it is the wall itself, whether it is the upper story, etc., etc. So, on the basis of structural strength, यानी लोड बेयरिंग कैपेसिटी और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के आधार पर वॉल्स जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं. नंबर वन, द लोड बेयरिंग वॉल. दे आर मोस्टली एक्सटर्नल वॉल्स, यानी बाहरी दीवारें जो होती हैं वो लोड बेयरिंग होती हैं, जो कि ऊपर का जो खुद के वजन को ले लें या फिर ऊपर की रूफ और ऊपर के मंजिल के सारे भार को कैरी करके नींवों तक ले जाती है, यानी फाउंडेशन पे ट्रांसफर करती है. ये दीवारें नींव से खड़ी होकर ऊपर का सारा लोड जो है वो बेयर करती हैं और इसीलिए इन्हें लिटरली लोड बेयरिंग वॉल्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसी दीवारें जो ज़्यादा से ज़्यादा वजन को बेयर करती हैं. ये बिल्डिंग के टाइप के ऊपर डिपेंड करके या फिर नंबर ऑफ स्टोरीज जो कि उसके ऊपर है, कितने मंजिल की बिल्डिंग है, उस पर निर्भर करता है कि लोड बेयरिंग वॉल की कितनी थिकनेस यानी कितनी चौड़ाई होने वाली है. आउटर वॉल can become unstable if the load exceeds the strength of the material used, and that is the reason why load bearing walls are made of the strongest of materials. It will always have cements or bricks or masonry work or stone work and not glass or wood, etc. A load bearing wall uses the strength of a sub wall to bear the weight. A load bearing wall जो है वो ब्रिक फसाड या फिर कई सारे दूसरे एलिमेंट्स का साथ लेकर एक अपनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करती है. एंड द मटेरियल्स दैट आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द लोड बेयरिंग वॉल्स इन लार्ज बिल्डिंग्स आर यूजुअली स्टोन्स, ब्रिक्स, कंक्रीट और कंक्रीट से बने हुए ब्लॉक which are called concrete blocks. Now, the second type of wall on the basis of structural strength and distribution of load is the non-load bearing wall. जहाँ लोड बेयरिंग वॉल को हम एक्सटीरियर वॉल के नाम से भी जानते हैं, नॉन लोड बेयरिंग वॉल को हम बोलते हैं इंटीरियर वॉल्स, बिकॉज इंटरनली इन वॉल्स का काम सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेशन ऑफ स्पेस या डिविजन ऑफ स्पेस होता है. दे डू नॉट कैरी एनी लोड अदर देन देयर ओन, यानी वो खुद के वजन के अलावा और किसी किस्म का कोई भार जो है वो नहीं उठाती है. ये ग्लास की वॉल्स हो सकती हैं, वुड की हो सकती हैं, इवन प्लास्टिक की वॉल्स भी हो सकती हैं. These internal walls or the non-load bearing walls, they integrate with the ceilings and they govern the room shape, size and character. So like I said, ये किसी भी स्पेस को अलग अलग रूम्स में डिवाइड करने में हेल्प करती हैं. अ पार्टीशन वॉल, जो कि आमतौर पर अगर आप ब्रिक की बनाते हैं तो अराउंड 4 इंचेस वाइड होती हैं. ये पार्टीशन वॉल्स जो हैं they also belong to the category of non-load bearing wall because they are merely doing the job of
dividing the space, being the partition between two spaces. So a partition wall is for the purpose of separating the rooms or dividing a room. That is all about the non-load bearing wall. As the name suggests, we can use more delicate materials और less strength वाले materials का उपयोग हम non load bearing walls को बनाने में यूज कर सकते हैं, और इसीलिए we can play with various items and provide a very nice aesthetic appeal to the house by building a wall of glass or a very nice wall of wood. The third category of wall are the room dividers. Now, how are they different from the interior walls, which are also the partition walls, which are also dividing the space? They divide the space, yet they are movable partitions. They are portable partitions. So, it is very easy to divide the space on a very temporary basis through room dividers. Non-load bearing wall भी partition का काम करती हैं, but that happens with a very permanent construction. Once you have constructed the non-load bearing wall, that is going to stay there. But with room dividers, ये large spaces को बहुत ही temporary basis पे divide करते हैं, क्योंकि ये बने बनाए structures होते हैं जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे move कर सकते हैं. They are movable partitions or portable partition walls that are used in the interiors, and they divide the large floor areas into smaller ones by either sliding through the space or folding screens by spreading out those folding screens. So that is the concept of room dividers. So these are the three types of walls on the basis of structure and load bearing capacity. Now looking at this figure, we can clearly identify which ones are the load bearing walls and which ones are the non-load bearing walls, only playing the role of partition walls. So in this hut-like structure, the roof is based on two walls that are on the extreme ends of this figure. दोनों corners की जो wall है वो ऊपर के पूरे structure का वजन लिए हुए हैं, पूरा भार जो है वो उन्हीं पर है, और ये हमारी load bearing wall होंगी, and these have to be made of very strong materials like bricks, cement, mortar, masonwork, stone, etc. The inner walls, that is the interior walls, they are not really bearing the load of the top structure. They are merely dividing the space that is between the two load bearing walls. जो जगह दोनों load bearing walls के बीच में है उसको divide करने का कार्य कर रही है non load bearing walls, वो merely partition walls हैं और ये ऊपर के structure का वजन नहीं वहन कर रही है. Now, on the basis of varieties and the purposes of different walls, there are various types of building walls. यानी अलग-अलग purpose से अलग-अलग types of building walls available होती हैं. Basically, इन्हें हम चार categories में divide करते हैं. The first one are the boundary walls and the retaining walls. Now what are boundary walls? बहुत ही literal सा meaning है boundary walls और retaining walls का. Boundary walls, they are thick walls that are meant for protection and acting as a barrier. आमतौर पर हर घर के बाहर हम एक बाउंड्री वॉल देखते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होती है और वो घर का दायरा तय करती है, घर की बाउंड्री तय करती हैं. ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ताकि कोई एनिमल्स या फिर कोई अनवांटेड एलिमेंट्स हमारे घर में एंटर ना करें, एंड इट आल्सो सर्व्स एज अ बैरियर हाउ कि ये घर में सीधा विजन भी नहीं देती, घर के अंदर सीधा झांकने को भी प्रिवेंट करती है. These boundary walls, they also integrate into fences. बाड़बंदी में भी ये बाउंड्री वॉल्स कई बार
बाड़बंदी में भी इंटीग्रेट करती हैं। कई बार एस्थेटिक अपील देने के लिए सॉलिड स्ट्रक्चरल बाउंड्री वॉल देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू नाइस लिटिल फेंस. So that is how you can also play with a boundary wall in terms of fencing and constructed boundary wall going together. Now, what are retaining walls? You might have seen there are certain structures where walls का उपयोग मिट्टी या गार्डन के को एक जगह पर रखने के लिए, रोके रखने के लिए बनाया जाता है. ये वॉल्स एक बांध की तरह काम करती हैं, लाइक अ डैम, जहां पीछे की मिट्टी या गार्डन एरिया को ढहने से बचाने के लिए इन वॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. These are those walls which retains the material that is behind them. जो अपने पीछे के तरफ जो भी मटेरियल रखा गया है उसको रिटेन करती हैं, उनको ढहने से बचाती हैं. So these are the retaining walls. We are going to look at a picture of one of the retaining walls shortly and you will get the concept what it is all about. It serves as a barrier ताकि पीछे की जो मिट्टी है वो मूव ना करे, ढहे ना. So it also acts like a dam. Retaining wall is a structure that is designed to withstand certain pressure. तो इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि पीछे जो भी गार्डन की सॉइल है या पत्थर है वो उसके ऊपर जो भी प्रेशर डाल रहे हैं वो उसको विथस्टैंड कर सके, उसको झेल सके. There are various types of retaining wall structures जो अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए जाते हैं, पर मोस्टली जो बहुत ही कॉमनली नजर आती हैं रिटेनिंग वॉल्स वो होती हैं गार्डन की वॉल्स, जो बहुत ही कम हाइट की वॉल्स होती हैं. Then let's come to the second category, which are the curtain walls and window walls. Now this is a very interesting concept. I am sure you might have seen those high-rise corporate buildings with a glass exterior. You know, their exterior is made of glass and you can, at night time, you can actually see through those glass walls, the glass exterior, and see what is happening inside the building. So these glass walls or the curtain walls, they are external walls and they are typically designed with aluminum members, यानी वो metal की framing के साथ बनाए जाते हैं और वो एक कर्टन की तरह, यानी एक कर्टन की तरह ऊपर के स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ लटकाए जाते हैं. तो जैसे हम पर्दे को ऊपर से नीचे की तरफ लटकाते हैं, वैसे ही कर्टन वॉल आमतौर पर जो ग्लास की बनी होती है वो अपने मेटल फ्रेमिंग से ऊपर से नीचे की तरफ लटक रहा होता है. It provides no strength or structural strength to the building whatsoever. It is merely constructed for a couple of purposes. Number one, to provide an attractive exterior to the building. Number two, in areas where you don't get so much heat and so much sunlight, in those areas, curtain wall structures are constructed so that maximum amount of sunlight can come into the building and maximum amount of heat and warmth can also come into the building. तो ये उन एरियाज में ज़्यादा बनाई जाती है जहाँ पर धूप की, सनलाइट की कमी है, बहुत कोल्ड एरियाज हैं, वहाँ पर कर्टन वॉल के एक्सटीरियर की बिल्डिंग्स हमें देखने में मिलती है. Then comes the window walls. कर्टन वॉल्स और विंडो वॉल्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है, कर्टन वॉल्स जो हैं वो मेटल फ्रेमिंग के साथ एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है. हाउएवर विंडो वॉल्स कंक्रीट के स्लैब्स के बीच में ग्लास की फिक्सिंग से बनते हैं. देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन सी जहाँ कर्टन वॉल्स कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स या ऑफिसेस के एक्सटीरियर में नजर आता है. विंडो वॉल्स आमतौर पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर में ज़्यादा नज़र आती हैं बिकॉज देयर वी नीड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ईदर कन्वर्टिंग इट इनटू अ balcony और अ लार्ज विंडो एट्सेट्रा. सो विंडो वॉल्स किसी भी मेटल के स्ट्रक्चर से लटकता हुआ ग्लास नहीं है, दैट इज अ कर्टन वॉल. विंडो वॉल्स कंक्रीट के या कंस्ट्रक्टेड लंबे लंबे पिलर्स के बीच फिक्स किए गए ग्लासेस को
कहा जाता है। इनको विंडोज की बजाय वॉल्स इसलिए माना जाता है बिकॉज ये बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। विंडोज जहाँ एक सेट साइज, इनका सेट साइज रहता है, वैसे ही विंडो वॉल्स में द होल ग्लास स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू अ वॉल इन टर्म्स ऑफ साइज। सो ये बड़े बड़े कॉन्क्रीट स्लैब्स के बीच में ग्लास की फिक्सिंग की जाती है रादर देन मेटल फ्रेमिंग विच इज फाउंड इन कर्टन वॉल्स। द थर्ड वन इज अ शेयर्ड वॉल, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कॉमन वॉल के नाम से जानते हैं। दो बिल्डिंग्स, हाउसेस जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सटके बने हुए हैं, एक कॉमन वॉल को शेयर करते हैं। दैट कॉमन वॉल इज द शेयर्ड वॉल। एक दोनों बिल्डिंग के बीच में एक दीवार, उसे हम शेयर्ड वॉल बोलते हैं। The reason why it is mentioned in one as a type of a building wall is because of the law that surrounds it. Because there are two different owners sharing a common wall, there are various special laws that govern कि किस तरीके से शेयर्ड वॉल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, कहाँ कंस्ट्रक्ट की जाएगी, so that none of the two owners have a loss of property. इसलिए शेयर्ड वॉल्स की कैटेगरी अलग से मेंशन की जाती है। These are the common walls between two buildings. Then the fourth category is other functional walls. Other functional walls, like we studied in the room dividers category, those kind of walls fall into this category as well. Other functional walls में portable walls like the partitions that we have, wood partitions, glass partitions, folding sheets of glass, folding walls of metal, room dividers, then cubicles. You might have seen big glass cubicles into offices where you have glass walls. So those kind of walls which are more functional and less permanent in their nature, they come into the category of other functional walls. Now we are going to look at some of the pictures which are going to clarify the concepts of boundary walls and retaining walls and so on and so forth. So this is a boundary wall. When you look at the picture, you can clearly see that it surrounds a building. ये एक building का दायरा clear करते हैं that this is from here on, from the boundary wall onwards, the whole area of the house starts. Okay, so the whole area is determined by the boundary wall. It is supposed to be, it should be very, very strong, and also it is supposed to be of such a height that it prevents undue vision of the outside elements to the inside of the house. It also acts as a barrier for the outside animals, insects, humans, etc. to the inside, to the interior of the house. So these are the retaining walls. When we look at these structures, we can see that these walls are basically created and constructed to keep the soil or the garden area at bay. If we were not to construct these walls, ये जो इसके पीछे की मिट्टी है, that is going to all fall forward. So retaining walls are basically created and constructed to keep the things, to retain the things against which it has been constructed. So retaining walls are basically constructed as those small, dwarf walls against a garden area, or maybe against some plantation area, so that we can keep the soil and the earth at bay. Then these are the curtain walls and the window walls. On the left side of the video, you can see a picture where the whole exterior is made up of glass and the lines running across it are made up of metal. So the whole exterior is glass with metal framing. This is how a curtain wall is. However, quite similar to this is a window wall, which is on the right side of the video. However, you will see that
that there are certain larger beams going across this window wall. These are concrete supports. So how is it constructed? In a curtain wall, the whole frame along with the glass is affixed. However, in the window wall, there is a concrete structure that is constructed before installing the glass, and every piece of glass has its own structure. So if you were to remove one section of glass, that will not impact the rest of the wall. This kind of flexibility is more desirable in residential buildings, whereas in order to grasp as much of the sunlight and heat from the outside environment, curtain walls are created mostly in corporate buildings and commercial buildings. And these are the other functional walls, which are temporary walls which can be folded, stretched, create temporary partitions in a larger space, and also for a time being they can create some segregated spaces, like in case of cubicles, glass cubicles or fiber cubicles, which can be constructed in a matter of days. You might have seen offices being set up in a matter of days, in a matter of hours even. So how is that possible? Because we can create walls from really um, light objects and light materials like glass, plastic, fibers, etc. So while looking at these pictures, I'm sure the whole concept of portable walls, cubicles, retaining walls and curtain walls is clear to you. So that's all about the concept of walls, and different types of walls there are available on the basis of structure and on the basis of load bearing capacity, and also on the basis of various purposes that the walls have. And for the notes on these topics, please check the description box below the video. Thank you all very much.